So, good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. How many students are there, beta? Why I don't know. Only few students join. बाद में इतना कॉल करके परेशान करते हैं बेटा आपके क्लास की गर्ल्स की मैम ये कैसा मैम वो कैसा सब चीजों के लिए परेशान करती है बाद में ठीक है सो day before yesterday we had started the blood है ना Yes, ma'am. हाँ I had told you the blood they had blood has two main components one is plasma and second is blood corpuscles ठीक है so I had taught you about the plasma the second part which is remain that is the blood corpuscles ठीक है so let's see now here I will write something on the board so is this board is clear to you Yes, ma'am. Yes, ma'am. beta blood corpuscles yes day before yesterday we had made flow chart है ना हमने flow chart बनाया था so today I will make two columns and simultaneously I will teach you about the RBCs and WBCs firstly we will see otherwise firstly we will see about the RBCs and then WBCs but I am making two columns okay here to RBC what is the full form of RBC I had told you that that day red blood corpuscles ठीक है what is the other name so other name of it is I will not write full sentences I will write only points okay so other name of it is erythrocyte other name of it is erythrocytes okay so these RBCs they are enucleated these are enucleated what do you mean by enucleated enucleated means the in which the nucleus will be absent that is called as enucleated they are biconcave biconcave means like this if we will see from lateral side so we will see that they are biconcave and spherical they are spherical biconcave and spherical ठीक है these RBCs where these are formed so these RBCs are formed in red bone marrow what do you mean by red bone marrow do you know what do you mean by red bone marrow so the long bones which we have तो लॉन्ग बोन्स में कौन कौन से बोन्स आएंगे तो हमारे हैंड्स के आर्म ठीक है आर्म फोर आर्म थाई एंड लेग्स के जो बोन्स हैं तो वो बोन्स में कैविटी प्रेजेंट है तो दैट कैविटी कंटेन वन स्ट्रक्चर which is red in color that is called as red bone marrow and in this red bone marrow RBCs, WBCs and platelets are. Okay, so these RBCs they are formed in the red bone marrow and that process, the process is called as erythrocyte, erythropoiesis.
erythropoiesis. Okay, this process is called as erythropoiesis, RBC formation. The first thing arises in our mind, what, why these cells are red? So these cells red in color, RBCs are red due to presence of hemoglobin. Then what is hemoglobin? This hemoglobin, it is one of the conjugate protein. So what is this conjugate protein? So when you will study about biochemistry, definitely you will aware about this conjugate protein. This hemoglobin, it is the conjugate protein, okay, which is made up of iron. It contains iron also, okay. So this hemoglobin is called as respiratory pigment. We call it as respiratory pigment. Okay, why we call it as respiratory pigment? Because it has great affinity towards oxygen. It has great affinity towards oxygen. Affinity, attraction. So as it has a great affinity towards oxygen, it will immediately combine with oxygen and it will carry oxygen to each and every part of the body. And so it is called as respiratory. Okay. So normally in our body, hemoglobin percent in male, it is near about 14 to 18 gram percent, and in female it is near about 12 to 16 gram percent. In Indian woman, this hemoglobin percentage very less. Okay, so what is the function of this hemoglobin? The function of hemoglobin is transfer of oxygen. So it is called as respiratory pigment. Just now I had told you. Okay, so if the hemoglobin percent, what do you understood gram percent unit? So gram percent means in 100 ml of blood we have, that day I had told you how many, what is the volume of blood? So that is 5 liter in the adult person. So if it will be less than means here, if in 100 ml of water, near about sorry, not water, in 100 ml of blood, near about 14 to 18 gram percent hemoglobin is present. If it will be less than that, or in female it is normally 12 to 16 gram per 100 ml of blood. But if it will be again less than that, then what will happen? The person will suffer from anemia. Anemia, it is not a disease actually, it is the symptom. Okay, it is, we can say, or it is a disorder, so in which hemoglobin percent becomes less. As the hemoglobin percent becomes less, so definitely we may have some symptoms like we may have breathlessness. जैसे अभी देखो ब्रेथलेसनेस बोले तो डायरेक्टली कोरोना की ही बात आती है. अगर इफ में वी में हैव वर्टाइगो अगर है तो कोई ये नहीं सोचेगा कि हमको एनीमिया हो सकता है. कोई भी यही सोचेगा ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है, बीपी तो लो नहीं हो रहा है, या किसी के बॉडी में अगर स्वेलिंग आता है तो वो पहले थायराइड के ही बारे में सोचेगा, अरे इसको थायराइड हो गया इसलिए इसका बॉडी जो है तो फूलते जा रहा है. लेकिन ये जो है तो दैट मे बी ड्यू टू एनीमिया आल्सो. तो एनीमिया, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एनीमिया? एनीमिया के सिम्टम्स क्या रहेंगे? तो एनीमिया में हम लोगों को जो है तो ब्रेथलेसनेस रहेगा. इन व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेथलेसनेस? जब हम जैसा चलते हैं, सीढ़ियां चलते हैं, तो सीढ़ियां चलते वक्त सभी को जो है तो
हाफने लगते ही है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है, और यहाँ तो ऑलरेडी ऑक्सीजन की कमी होते जा रही है, तो दैट ड्यू टू विच वी कैन do like this. So that is breathlessness, and breathlessness it is the more common symptom. Beside this, weakness is there. तो हम लोगों के जो वर्क करने की कैपेसिटी जो होती है, जो एनिमिक पर्सन होता है, उसकी कम होती है, ठीक है. वर्किंग कैपेसिटी विल बी लेस देन द नॉर्मल पर्सन, एंड हियर द बॉडी विल बिकम पेल, पेल हो जाएगी बॉडी. जैसे हमारे यहाँ पर ये जो कंजंक्टिवा होते हैं, तो ये रेड ना रहते हुए पेल रहेंगे. हमारी टंग है, हमारे नेल्स है, तो दे विल लुक पेल. पेल का मतलब बिल्कुल ऐसे जो है तो व्हाइटिश अपीयरेंस में दिखने लगते हैं, ठीक है. तो ये सब जो है ये साइंस रहेंगे, सिम्टम्स रहेंगे एनीमिया के. उसके बाद में जो है, तो मैंने वर्टाइगो भी बताया. तो वर्टाइगो मीन्स चक्कर आना. तो उसको जो है तो जैसे कुछ करने जाता है तो जोर से ऐसे चक्कर आएगा. तो दिस ऑल आर द सिम्टम्स ड्यू टू एनीमिया. एनीमिया तो बहुत सारे टाइप के हैं, तो वो हम बाद में आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है. अब यहाँ पर मैंने कहा कि एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस जो है, तो दैट दिस एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द red bone marrow. Okay, so here what is the normal percentage of RBCs? Actually blood, मैंने कल कहा था कि blood is viscid. Why blood is viscid? Because of the RBCs. अब RBCs जो है तो इसकी वजह से blood कैसा है, तो वो viscid है. viscid यानी गाढ़ा है. तो डेफिनेटली अगर वो गाढ़ा है ब्लड, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि RBCs का परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए. So what is the normal count? So let's see the normal count in adult person. Definitely it will be less in the female than male. What is the reason? The reason behind it is that here in female, due to menstrual flow, the blood loss is there. Near about 5 days blood loss is there, and because of it, the hemoglobin percent will be always less in female as compared to male. So in normal count in male, it will be near about 5.3 millions to 5.9 millions per cubic millimeter of blood. What is this cubic millimeter? Cubic millimeter, it is the volume ना. ये वॉल्यूम है. अगर 1 मिलीमीटर इतना सा भी हो जाएगा, आपको भी नहीं दिखेगा. तो इतने से हमारे ब्लड वॉल्यूम में हाउ मेनी आरबीसीज विल बी देयर, तो नियर अबाउट 5.3 to 5.9 मिलियंस, ठीक है. बट व्हाट अबाउट इन फीमेल? इन फीमेल the 4.8 to 5.2 millions per cubic millimeter of blood. तो जरा सोचो कि कितना ज्यादा. देखो सिर्फ हम मिलीमीटर की बात कर रहे हैं, तो 1 क्यूबिक मिलीमीटर में इतना ज्यादा है, तो अरे 5 लीटर में कितने होंगे, हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं. इतने ज्यादा आरबीसीज जो है एरिथ्रोसाइट्स प्रेजेंट. समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है. तो फीमेल में डेफिनेटली द काउंट विल बी लेस. लेकिन यहाँ पर जो है तो हमेशा ऐसा रहेगा क्या कि द काउंट विल बी सेम इन ऑल द पर्सन? टू नो, इट नॉट बी लाइक दैट. तो यहाँ पर जो है कि इन सम पर्सन इफ द दिस आरबीसी काउंट लेस रहेगा, then that condition is called as erythrocytopenia. Erythrocytopenia. What do you mean by erythrocytopenia? When the RBC count, that means erythrocyte count, will be less, then it is called as erythrocytopenia. And in some person, it may be more than the normal one. So it may be happen to RBC count when it will be more than normal, then it is called as polycythemia.
ओके, पॉलीसाइथेमिया। तो डेफिनेटली अगर ज्यादा रहेगा तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, वी विल बी हेल्दी। बट आपने ये देखा होगा कभी जो रिपोर्ट है तो उसमें मीन सेल वॉल्यूम ऐसा दिया रहता है, मीन सेल वॉल्यूम। तो वो मीन सेल वॉल्यूम दैट इज नथिंग बट द जो टोटल काउंट होता है तो वो कंसिडर किया जाता है। एंड हियर if it will be less तो definitely we may have some problems। जैसे मुझे खुद को ही जो है तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, ब्रीथलेसनेस होता है, तो मैं थोड़े थोड़े देर में जो है तो बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा ब्रीदिंग ये करती हूँ। एक तो शायद मैं कंटिन्यू लेक्चर्स लेती हूँ, क्लासेस लेती हूँ, ये भी एक रीजन हो सकता है। एंड आई एम ऑल्सो एनीमिक कि मुझे एनीमिया भी है, आई एम ऑल्सो थायराइड पर्सन। तो ये सारी चीजें जो है तो ये हमको काउंट होती है हमारे इसमें कि जिसकी वजह से हमको ब्रीथलेसनेस रहेगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है तो जिनका आरबीसी काउंट कम है means they are suffering from the erythrocytopenia or they have a less hemoglobin percent, so they may have breathlessness problem। उनको breathlessness problem रहेगा ही रहेगा। Do you understood? Do you understood all of you? Yes, ma'am. Yes. Okay. Yes, ma'am. Now here these RBCs, what will be the function of this RBCs? So the main function of this RBC is the first function of it is the it provide as it will provide oxygen. So the main function is internal respiration. Internal respiration, it is the first function of these RBCs. What about the next one? It makes the blood viscid. It will make the blood viscid. Okay, this is the second function which we can see. And the third one, it maintain buffer action. It maintain buffer action. So what is buffer action? It maintain buffer action means what? तो it will try to maintain the pH जो है तो वो maintain रहेगा। अगर कोई particular secretion जो हो रहा है body में, if it will be acidic तो it will keep it acidic, if it will be basic तो it will keep it basic, if it will be neutral तो it will keep it neutral। So, like that it will maintain all these things. That's why we call it as buffer action. Okay, do you understood all of you? Yes, ma'am. Okay, so this is all about the RBCs. If you want to take a screenshot of you or you want to note it down, you can note it down. What do you want? Do you want to note it down or you are taking screenshot? Yes? Is it clear? If you are taking screenshot, हाँ मैं हट जाती हूँ। हाँ मैं हट जाती हूँ। You take the screenshot. Okay. Done, ma'am. Okay. Now the next is the WBC. Okay. The next the next blood corpuscle is the WBC. मैंने सोचा था कि मैं दोनों साइड में यानी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी लिखूंगी, लेकिन स्पेस नहीं हुई, तो अब मुझे मिटाना पड़ेगा और अब मैं डब्ल्यूबीसी का बताने जा रही हूँ। ओके,
Okay. Here one thing I just forgotten. कि RBCs, they are formed in the red bone marrow, but they die in the spleen. Spleen, it is the organ which is present on the left hand side. ठीक है? Stomach जो होता है, तो I can show you 1 minute. Are you able to see this? Are you able to see this? Yes, ma'am. हाँ, this is Yes. liver. ये लीवर है, ठीक है। उसके बाद में ये जो दिख रहा है, दिस इज पेनक्रिया। एंड आर यू एबल टू सी दिस पर्पल कलर वन पार्ट हियर? Yes, दिस ma'am. पर्पल कलर, यस। तो दिस इज स्प्लीन, ठीक है। दिस इज स्प्लीन। दिस पर्पल कलर पार्ट, लुक हियर अगेन, आई एम शोइंग यू, ठीक है। तो दिस पर्पल कलर पार्ट, दिस पर्पल कलर ऑर्गन, दिस ऑर्गन इज द स्प्लीन, ठीक है। तो these RBCs, they are, these are formed in the red bone marrow that I had told you. These RBCs, they have 120 days lifespan. आपको इतना तो पता होगा कि हमारी बॉडी में हर सेल जो है तो फॉर्म होती रहती है, और बाद में जो है तो वो क्या होते रहती है, मरते रहती है, डेड होते रहती है, अगेन न्यू सेल्स फॉर्म। तो लाइक दैट आरबीसीज जो है तो दे आर आल्सो फॉर्म एंड डाई। तो दे विल डाई इन द स्प्लीन, स्प्लीन में वो डाई होती है, दे विल फॉर्म इन द लीवर। जो फीटस होता है, तो फीटस में हमारे जो बोन्स रहते हैं वो डेवलप नहीं होते हैं। या जो इन्फेंट भी होता है, इन्फेंट मीन्स जो 1 साल तक का बच्चा होता है, उनके बोन्स भी अच्छे खासे डेवलप नहीं हुए रहते हैं। तो उनमें जो आरबीसीज है तो वो कहाँ पे फॉर्म होते हैं? तो दीज आरबीसीज दे आर फॉर्म इन द लीवर, जो लीवर है उसमें और किडनी में फॉर्म होते हैं। हमारे इसमें भी किडनी में और लीवर में आरबीसीज फॉर्म होते हैं, लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में, नॉट इन अ नॉर्मल कंडीशन। हमारे बॉडी में नॉर्मल कंडीशन में जो है तो दैट विल फॉर्म ओनली एंड ओनली इन द रेड। ओके, इज इट क्लियर नाउ? सबको समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. ठीक, हाँ। तो जब आरबीसीज की डेथ होती है, ठीक है, आफ्टर 120 डेज, 120 डेज बोले तो 3 4 12, यानी 4 मंथ तक आरबीसीज जो है रहेंगे। इसीलिए तो जिनको थैलेसेमिया होता है, आई विल टेल यू लेटर ऑन कि व्हाट इज थैलेसेमिया, या किसी को जो है तो सिकल सेल एनीमिया है, सीवियर फॉर्म का सिकल सेल एनीमिया है, या फिर किसी को ब्लड कैंसर है, तो उनको ब्लड डोनेट करना होता है। वो हमेशा ब्लड जो, सॉरी ब्लड डोनेट नहीं, उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है, कि हमको ब्लड देना होता है उनको। तो एवरी 3 मंथ्स जो है तो हम लोग उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। तो व्हाई आफ्टर 3 मंथ? तो दैट इज द रीजन कि ये 120 डेज तक ही आरबीसीज रहेंगे ना, उसके बाद में वो डिस्ट्रॉय होते हैं, मरते हैं। तो जब वो डिस्ट्रॉय होते हैं ना, तो मैंने अभी बताया था कि आरबीसीज कंटेन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। हीमोग्लोबिन इट इज द कॉन्जुगेट प्रोटीन, आयरन भी है उसमें, प्रोटीन भी है। तो ये जो आयरन और प्रोटीन होता है वो डिपॉजिट रहता है, और बाकी जो है तो वो डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। तो ये आयरन का यूटिलाइजेशन होगा वापस से, किस लिए? ताकि अगेन द आरबीसी फॉर्मेशन प्रोसेस। ओके, so this is all about the RBCs. Now let's see about the WBCs. एक बार मैं एक सेमिनार में गई थी, ठीक है। तो उस सेमिनार में हम यानी उन्होंने क्वेश्चन पूछा डॉक्टर साहब ने कि one doctor is present inside our body, can you tell me the name?
पता है? डू यू नो? एक डॉक्टर जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, जो हमेशा हमारी देखभाल करता है, और आज भी अगर मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो उस डॉक्टर की वजह से हूँ। दो आई एम ट्रीटिंग द कोरोना पेशेंट, स्टिल उस डॉक्टर की वजह से मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ और मैं आपको पढ़ा रही हूँ। कोई बता सकता है? Anybody knows about it? And willpower. Hmm? Willpower. Willpower? No, beta. That is not the willpower. So, I'm Ma'am? huh? So that doctor is nothing but the WBC. अरे मैं ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रही हूँ? ये स्टार्ट करने से पहले अगर मैं ये इस तरह से क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो डेफिनेटली इट विल बी रिलेटेड विद दिस टॉपिक ना, है कि नहीं? तो दैट डॉक्टर which is present inside our body is our immunity. आपको पता है ना अभी इन दिस कोरोना पेंडेमिक कि जिसकी इम्यूनिटी कम है, ठीक है, जिसकी इम्यूनिटी कम है वो निमोनिया से सफर हो रहा है, और निमोनिया से सफर होने के बाद में उसकी डेथ हो रही है। मेरे खुद के घर में जो है तो अभी 2-3 डेथ हुई है विद इन दिस 3 to 4 days। मेरी कजन, मेरे मामा और भैया, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। तो why this death occur? As their immunity is low, है ना? तो ऐसा कौन है हमारे बॉडी में जो हमारे इम्यूनिटी मेंटेन करता है? तो हमारे इम्यूनिटी मेंटेन करने वाला वो कोई नहीं, कौन है? जो हमारे अभी दैट इज नथिंग बट द WBC। ओके, तो डेफिनेटली जो हमारी देखभाल कर रहा है, जो हमारा डॉक्टर है, जो हमारी केयर कर रहा है कि अगर कोई इन्फेक्शन जाता है तो उसको डिस्ट्रॉय करना है और हमको हेल्दी रखने वाला। तो लेट्स सी व्हाट इज द अदर नेम ऑफ इट, दैट इज द ल्यूकोसाइट। ठीक है, तो these leukocytes they are amoeboid। These are amoeboid, nucleated, and phagocytic। I had used 3 words. What are they? WBCs are amoeboid, nucleated, and these are phagocytic। So let's see first. What do you mean by amoeboid? Do you know about amoeba? Okay, amoeba, unicellular, shapeless बॉडी स्ट्रक्चर। कैसे भी निकाल लो आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना? अमीबा का जब हम लोग लोअर क्लासेस में थे और उस समय में अमीबा का अगर डायग्राम निकालने के लिए बोलो तो कोई मार्क्स नहीं काट सकता, कैसे भी निकाल लो, बिकॉज इट इज अ शेपलेस। तो लाइक दैट WBC it is also shapeless, it is that's why it is called as amoeba। अब देखो इसको, ये शेपलेस है तो इसका क्या यूज होगा? तो ये शेपलेस है ना, तो उसका साइज जो है तो कैसे भी चेंज होते रहे। एज इट्स साइज चेंजेस इट कैन स्क्वीज आउट थ्रू द कैपिलरीज। जो कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज जो ब्लड वेसल्स है, थीन, बिल्कुल अपने हेयर के इतनी थीन जो ब्लड वेसल्स होती हैं, दे आर कॉल्ड एज कैपिलरीज। एंड these capillaries they have a small pores, कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, उसमें से भी ये बाहर निकल जाते हैं। अब उसमें से भी ये बाहर निकल जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो अमीबॉइड शेप के हुए इसीलिए बाहर निकल जाते हैं। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डायलिसिस। डायलिसिस due to
amoeboid shape WBC is easily squeezed out. Squeezed out through capillaries. That process is called as diapedesis. Okay. Then these are nucleated. Nucleated means they have a nucleus. इसमें nucleus present है. That's why we are saying that they are nucleated. Then phagocytic. Phagocytic means एनाकोंडा का आप लोगों ने फिल्म देखी होगी एनाकोंडा. Have you seen it? एनाकोंडा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो क्या करता है बोलो. अगर सपोज जैसे हमारे सामने अब एनाकोंडा आता है तो वो क्या करेगा. पूरे हमारे बॉडी को क्या करेगा. रैप कर लेगा एंड देन एनगल्फ कर लेगा. पूरा का पूरा खा लेगा अंदर, है ना. तो ऐसे ही प्रोसेस जो है ये WBC करता है. अगर कोई भी वायरसेस या बैक्टीरियाज or any foreign body when enter inside the body, they will wrap it like that anaconda and engulf it. यानी पूरी का पूरा वो निकल जाए. तो such type of process is called as phagocytosis. Okay, as phagocytosis is performed by these WBCs, we call them as a phagocytic cell. Okay, then these WBCs they are bigger than the RBCs. RBCs का diameter जो होता है तो that is 7 to 8 micrometer होता है. And what about WBCs? WBCs diameter is 8 to 15 micrometer. इनका diameter बड़ा है 8 to 15 micrometer. What is the normal count? Normal count कितना होता है? 4,000 to 11,000. 6,000 to 10,000. 5,000 to 9,000 per cubic millimeter of blood. If you will not say this cubic millimeter of blood, your answer is wrong. Okay. So in cubic millimeter of blood, these are 5,000 to 9,000. Not more than that, not less than. Okay. Where these are formed? So these are formed in red bone marrow. I had already told you that in the red bone marrow, RBCs, WBCs, and platelets all will be formed. Red bone marrow. Then these are formed in the lymph nodes. These are formed in the spleen. Spleen, है ना? RBC की डेथ प्लेस है. इसकी क्या है? बर्थ प्लेस है spleen. Then thymus. Thymus ये gland है which is present near the heart. It is endocrine gland. ठीक है, thymus. Then in the tonsils. Tonsils ये जो है ये बड़े हुए दिख रहे हैं अभी. These are tonsils. ठीक है. तो ये सब जो है यहाँ हर जगह पर WBCs जो है तो उनका फॉर्मेशन होता है. ठीक है. That process of formation is called as leukopoiesis. Leukopoiesis. This process is called as leukopoiesis. As I had told you, the normal count is this. But if the person will get infected or if the person's immunity is less, so definitely we can see some variation. So if the WBC count will be less than 5,000, okay, so that condition is called as leukocytopenia. And if the WBC count will be more than the normal one, then it is called as leukocytosis. It is
is called as leukocytosis. Okay, do you understood? Do you understood? Yes, ma'am. We have seen that RBC, they are red in color. Why they are red in color? Due to the presence of hemoglobin. Hemoglobin. Colorless. These are colorless. These are colorless due to the absence of hemoglobin. Okay? Hemoglobin is absent, so they are colorless. What is the lifespan of RBC we have seen? So that is the 120 days, and here lifespan is only 3 to 4 days. In 3 to 4 days, they die, again they will form. So when they will die, where they will die? So these the WBCs die in the bloodstream. They will die in the bloodstream. Bloodstream में die होते हैं, ठीक है? वो कहाँ पे होते हैं? तो स्प्लीन में होते हैं, और स्प्लीन में यहाँ पर तो फॉर्मेशन हो रहा है, तो डेफिनेटली ये ब्लड स्ट्रीम बोले तो जो ब्लड फ्लो हो रहा है, तो वो ब्लड फ्लो होते वक्त उसमें जो है इनकी डेथ हो जाए। इज इट क्लियर बेटा? समझ में आया? Yes, ma'am. सो ये जो WBCs है, ये WBCs ये कैटेगराइज किए गए हैं टू on basis of what? On basis of whether the granules are present inside them or not. Granules का मतलब जो ऐसे दानेदार जो है, तो स्ट्रक्चर जो रहेगा that is called as granular. तो on basis of granules present or absent, WBCs are categorized or classified into two types. One is granulocytes and the second agranulocytes. Agranulocytes and granulocytes. Are you able to see? Are you able to see this board? Yes, ma'am. Okay. हाँ. तो granulocyte तो definitely granules will present in cytoplasm. Cytoplasm में granules present रहेगा. Here granules absent. तो total WBCs में these are 65%. These are only 35%. Then these granulocytes, they will contain lobed nucleus. Lobed nucleus is present. What do you mean by lobed nucleus? So see, like this. If the nucleus will be like this, that is called as lobed nucleus. Here single nucleus will be present. Single nucleus will be present. These will be forming red bone marrow. What about these? So this will be forming other than spleen, thymus, lymph nodes, tonsils, etc. Okay. So here, when we take a total leukocyte count, जो CBC हमको पढ़ना है ना, तो बाद में हम पढ़ेंगे, तो CBC में हम TLC DLC कराते हैं. TLC total leukocyte count. Leukocyte means WBCs. ठीक है? So we know that what is the total leukocyte count? That is 5,000 to 9,000. तो here जब हमको ये करना होता है
टोटल ल्यूकोसाइट काउंट या डीएलसी, डीएलसी का मतलब होता है डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट, तो डिफरेंट टाइप्स दैट वी विल स्टडी टुमारो। तो यहाँ पर जो है जो स्टेन, तो हम लोगों को क्या करना होता है, जो हम जैसा पेशेंट का सैंपल लेते हैं तो वो हम स्लाइड पर जो है तो ब्लड लेते हैं और उसकी स्लाइड बनाते हैं। एक स्लाइड के ऊपर में दूसरी स्लाइड को जो है वैसे स्लाइड ऐसे घसते हैं तो एक स्मीयर बनता है, और वो स्मीयर पे हम लोग क्या करते हैं, एक डाई डालते हैं जिसको हम स्टेन बोलते हैं। तो ये जो है यहाँ पर ग्रेन्युलोसाइट को कलर आता है, स्टेनिंग होता है, इनका स्टेनिंग नहीं होता, ठीक है। तो दैट पॉइंट वी विल राइट this stain with dye, this will not stain, not stain dyes. Okay, so do you understood this one? Do you understood this one? Yes, ma'am. So if the question may ask how can you will differentiate between the RBCs and WBCs, you can take the screenshot of it. मैं हट जाती हूँ, ले लो आप स्क्रीनशॉट। Okay, Yes. okay, have you taken? Yes, ma'am. एक्चुअली स्टेमिना कम हो रहा है ऐसा दिख रहा है अभी मुझे, थकावट आ जाती है, ज्यादा देर खड़ा भी नहीं रहना हो रहा और ज्यादा देर बात करना भी नहीं हो रहा, शायद एजिंग ये भी एक फैक्टर आ रहा होगा, पता नहीं, लेकिन अब एकदम से अनकंफर्ट होने लगा, ब्रेथलेसनेस होने लगा, या अभी जो समय है तो बहुत ज्यादा धूप भी होती है उस वजह से भी होगा। तो इफ आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में डिफरेंशिएट करने के लिए आता है तो कैन यू डिफरेंशिएट इट, कैन यू डिफरेंशिएट इट प्रॉपरली? आई हैड गिवन पॉइंट्स ना, मैंने पॉइंट्स दिए आपको, आरबीसी के भी दिए और डब्ल्यूबीसी के भी दिए हैं, तो आप कर सकते हो, yes or no? Yes, ma'am. So many points you can make, just I am revising fastly so that you just prepared it today, okay? So here the first one, the name of RBC is erythrocyte, the name of WBC is leukocyte. Then second point is that RBCs, they are red in color due to the presence of hemoglobin. WBCs, they are colorless due to the absence of RBCs. Hemoglobin. Then the third point is that these RBCs, they are formed in the red bone marrow. WBCs, they are formed in the red bone marrow, tonsils, spleen, thymus, and so on. Then the normal count of RBC is in male, it is 5.3 to 5.9 millions per cubic millimeter of blood, and in female it is 4.8 to 5.2 millions per cubic millimeter of blood. The normal count of WBC is 5,000 to 9,000. There is no categorization in male and female. Okay, these RBCs, they are enucleated. WBCs, they are nucleated and amoeboid in shape, as well as they are phagocytic. RBCs, the process of formation of RBCs is called as erythropoiesis, and the formation of WBCs is called as leukopoiesis. After that, the increase in the rate of RBCs is called as increase rate is called as polycythemia. The increase rate of WBCs is called as
erythrocytosis. Sorry, leukocytosis, not erythrocytosis, leukocytosis. Then decrease in the number of RBCs is called as erythrocytopenia, and the decrease in the number of WBC is called as leukocytopenia. RBCs, they are die in the spleen. WBCs, they die in the bloodstream. The main function of RBC is internal respiration, and the main function of WBC is phagocytosis. ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? Beside this, the lifespan of RBC is 120 days. The lifespan of WBC is 3 to 4 days. Then the diameter of RBC is 7 to 8 micrometer, and the diameter of WBC is 8 to 15 micrometer. So these are some differentiating points. You have to depend yourself. Okay? Do you understood or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We will see different types of WBCs and then platelets. Okay? So thank you. I will send some notes today. Yeah? Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.